Good evening. Once again, welcome to another exciting session today, History of Medical Cannabis. So, thanks all of you for joining us again. And we are very much thankful to Bombay Hem Company, one of the leading organization in medical cannabis as far as our country is concerned. And we have Mr. Jahan Peston Jamas, co-founder and chief strategical officer for Bombay Hem Company. Welcome, Jahan, again on our platform. And thank you for your time and the support your organization is giving to empower the entire fraternity in terms of exploring the knowledge aspects with all the learned professionals. And I also welcome Dr. Prashant Jain, one of the, I will say, budding medical cannabis practitioner. And he is the founder of Nirmal Ayurved and former Ayurveda consultant in CARI, one of the renowned central government institute in Delhi. And he is having BMS, MD, and he is pursuing PhD right now. So I'm very much happy and pleased to introduce Dr. Prashant Jain to all of you because we have seen like he is very much now like getting involved into the medical cannabis practice, and there are very few doctors in India who are actively getting involved. And when we started this initiative, I remember on our platform, so initially there was so much of confusions and so much of queries were there, but gradually I am seeing now more and more doctors are joining this campaign of spreading and disseminating the medical cannabis practice in our country. So again, welcome Dr. Prashant, and I quickly request Jahan to share the introductory remarks, and then we will hand over the session to Dr. Prashant Jain for his talk and presentation today. Thank you. Thank you so much, Dr. Piyush, and thank you so much, Dr. Prashant, for joining us for this special session. I will keep this short as a matter of introduction. I'm sure quite a few of the listeners, have the experience of me being on this platform before with different topics. My name is Jahan Peston Jamas. I'm one of the co-founders at Bombay Hem Company and the chief strategy officer. The goal, हमारा जो मकसद था from this session, is to understand हमारे जो कैनबिस या भांग की जो इतिहास होती है, how do we value it? Now we are at a point in the present and future where countries like Canada, European countries, even African, South American and Asian countries are coming back towards a plant that grew in their own backyard. But the history of this plant is much older than this current day use, where historically, as we've seen through the channels of Ayurveda, there is historical mention and reference of this being a key part of treatment, of being able to help patients for many hundreds of years, even going back several centuries. And that is where we felt is important कि जितना हम प्रेजेंट और भविष्य के बारे में सोचे, we also must repay respect to the past, and that is where Dr. Prashant Jain, as a qualified, renowned medical practitioner and professional who has actually excelled and learned across the domain of medical cannabis, including a major part of the history. We are very delighted to have this session, ताकि many doctors and practitioners, patients and public can get more knowledge about this, the cannabis of Vijay or the bhang plant and the जो पौधा है, and be able to link it to the present and future जो हम मतलब we are all aiming to pursue together. So without any further delay, we will hand over to you, Dr. Prashant, for a very exciting, very riveting session ahead. So over to you, Dr. Prashant. Thank you, John, and thank you, Piyush sir, for introducing me to the Bombay Ham Company and to all the public here, all the doctors who are attending this session. So let me give a very quick brief कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. So starting with, हम सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखते हैं मेडिकल कैनबिस के लिए, so I'll just switch on the slides. So this is, तो अगर हम मेडिकल कैनबिस की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया में मेडिकल कैनबिस कहाँ से शुरू हुआ या कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, बिकॉज इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारत की हम बात करते हैं, तो मेडिकल कैनबिस तब से है जब से भारत एग्जिस्ट करता है. आई थिंक सर ये स्लाइड्स अपने आप चेंज होती रहेंगी क्या इस पे? सॉरी, नहीं नहीं, आप कर सकते हैं. वी वर जस्ट चेकिंग फ्रॉम हियर एंड जो ठीक से हो रहा है तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली. आप कर पा रहे हैं चेंज? एक बार चेक कर लीजिए. हाँ, मेरे पास से हो रही है चीज़ें. आई कैन. ठीक है. ओके. सो इंडिया में, भारत में अगर हम बात करते हैं मेडिकल कैनबिस की, तो भारत में जब से भारत है तब से मेडिकल कैनबिस है, या जब से हम कहें भारत है तब से आयुर्वेद है, और जब से आयुर्वेद है तब से ही हम मेडिकल कैनबिस को या भांग को
औषधि के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि भांग का इस्तेमाल कैसे रेस्ट्रिक्ट करा गया इंडिया में, और फिर कैसे दोबारा से उसे इंटरनेशनली लीगलाइज करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया गया है, बट इंडिया में स्टिल वो अभी तक भी पूरी तरह से लीगलाइज नहीं हो पाया है। राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। मोर ओवर बाकी सारे एंशियंट सिविलाइजेशंस में कैसे कैसे भांग को इस्तेमाल करा जाता था और उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे जो पहले लिए जाते थे, जिन सबको आज हम छोड़ चुके हैं या हमें पता नहीं है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को आज हम देखेंगे। अगर हम बात करते रहेंगे मेडिकल कैनबिस की हिस्ट्री के बारे में तो ये इतना लंबा टॉपिक है, शायद 2 या 3 4 5 घंटे भी अगर हम बात करते रहें तब भी वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम थोड़ा सा छोटे में इसको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि थोड़े यूजफुल पॉइंट्स जो हैं जो पता होने चाहिए वो हमारे को पता लग जाए। राइट। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कैनबिस की हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई बाहर। मैं फिर यहाँ पे बात करूँगा, हम भारत की बात नहीं करेंगे, हम बाहर की बात करेंगे। तो कहीं से भी हम अगर शुरू करते हैं तो किसी को भी सर्टेनिटी नहीं है कि कहाँ से मेडिकल कैनबिस शुरू हुआ था एक्चुअली, या कैनबिस भांग को मेडिसिनली यूज करना कब शुरू करा गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो भांग सभी जगह प्रेजेंट है, और उसके बारे में एक ये बात करी जाती है कि शायद भांग को लेके कोई कोई कहीं कहीं गया था। लोग बाग पहले घूमते थे इधर से उधर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, तो अपने साथ उनके बेनिफिट्स देख के वो ले गए और इस तरह से पूरे विश्व में फैला है। जिसके पीछे लास्ट में अगर आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैला है। उसके बाद कैनाल्स का फार्माकोलॉजिकली डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे उसको पता लगा, किस किस स्टेप में पता लगा। तो सबसे पहले कैनाबिस हम यूज करते थे, अगर आज से 10,000 साल पहले की बात करें तो वो फाइबर उसका ज्यादा इस्तेमाल होता था। उसके उसके बाद उसके सीड्स इस्तेमाल होने लगे फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, जो आज हम अभी भी देखते हैं। और लास्टली उसका फिर बाद में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स डेवलप हुई कि मेडिसिनली उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल डिस्कवरी में फर्दर बात करते हैं तो कौन कौन से ट्रेडिशंस में कैसे कैसे उसका इस्तेमाल होता था। तो चाइनीज ट्रेडिशन में अराउंड 28th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय ये देखा गया था कि चाइनीज टेक्स्ट जो थे उसमें कहीं ना कहीं भांग का इस्तेमाल होता था। और वो उस समय भांग इस्तेमाल होता था मोस्टली हेलिसिनेटरी इफेक्ट्स में, या फिर भूख बढ़ाने के लिए, टॉनिक बनाने के लिए, या फिर सेनिलिटी के अंदर उसको ज़्यादा दिया जाता था, उसको कम करने के लिए ज़्यादा दिया जाता था। अगर किसी पेशेंट को हेलुसिनेशन ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे भांग का इस्तेमाल होता था। कुछ भी नॉइजेस सुनाई देती हैं, टेक्टाइल हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी है, गस्टेटरी है, किसी भी तरह की, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल ज़्यादा था। अगर हम इजिप्ट की बात करें, मिस्र वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे इजिप्शियन पिरामिड्स में जो वहाँ पे स्टोन है वहाँ पे इसकी भांग की क्रेविंग्स मिली हैं, मतलब उन्होंने गढ़ रखा है, तो इसका मतलब उस समय तक में भी भांग का इस्तेमाल होता था। और वहाँ पे जो क्रेविंग्स मिली है उसके अंदर दिखाया गया है कि वो ओरल, रेक्टल और टॉपिकल एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल होता था। इवन कि उस समय इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे वो मेडिसिनली कि ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में या इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट में ये भी वहाँ पे नॉलेज थी कि उस समय भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे वो। बाद में जैसे जैसे हम और आगे देखते रहते हैं तो सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज हमें दिखती हैं कि 1800 बीसी में बेबीलोन थॉमसन ने उसके ऊपर रिसर्च करी, जिसको रोसो ने अपने पेपर में मेंशन करा है कि मेडिकल कैनाबिस को मेडिसिनली यूज करा जाता था शोक के अंदर, ग्रीफ में, एपिलेप्सी में, पेन में, और बालों के अंदर लाइसिस जो हो जाती हैं तब उसके अंदर इस्तेमाल करते थे। 1500 बीसी के अराउंड का एक है डॉक्यूमेंटेड, जो इंडियन हैम्प ड्रग ड्रग कमीशन एक सेटअप हुआ था 1894 में विद ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इन दोनों ने मिलकर हैम्प के ऊपर रिसर्च करा था, उसके अंदर आया था कि हैम्प को एंटी एंजाइटी भी वो इस्तेमाल करते थे। फर्दर देखने को मिला कि चाइनीज डिक्शनरी के थ्रू कि मेल प्लांट जो है वो फाइबर के लिए ज़्यादा यूजफुल है, एंड फीमेल प्लांट जो है वो इंटॉक्सिकेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ऑब्वियसली फीमेल प्लांट पे बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो उनसे उसमें हाई लेवल ऑफ टीएचसी एंड सीबीडी पाया जाता है जो इंटॉक्सिकेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता था। फिर कैनाबिस इज वेरी गुड, वेरी वाइडली यूज्ड फॉर द बर्न ट्रीटमेंट। तो रोमन एम्पायर में 23 to 79 एडी के आसपास वहाँ पे एक राइटिंग मिलती है हमें जिसके अंदर लिखा है कि कैनाबिस को बर्न्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो रॉ जो ताजा जला हुआ होता था, रॉ बर्न्स है, उसके ऊपर इसे अप्लाई करते थे, लेकिन इसकी बैंडेज को फ्रीक्वेंटली चेंज करना होता था सो दैट कि वहाँ पे वो सड़े नहीं, गले नहीं, और कोई इन्फेक्शन का सोर्स ना आए। और सिमिलरली फ्रैंकियस रेबेलियस ने भी इसको 1400s में इसको मेंशन करा है कि बर्न को है तो उसके ऊपर रॉ कैनबिस को रब करना है, जो डायरेक्ट निकाली गई हो, उसको वैसे कहीं भी नहीं हो, उससे भी हमारे को इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हो। तो ये हमारे को और दिखने को मिलता है कि कैसे कैसे हम अपनी
अंडरस्टैंडिंग को कैनाबिस के टर्म्स में या एक्सपेरिमेंट्स को और बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट जो मिलता है वो अराउंड 1700s के आसपास मिलता है कैनाबिस का। तो जो एडिनबर्ग न्यू डिस्पेंसेटरी में है, यूएस 1794 में दिया गया है। आप इसकी साइड में पिक्चर एक छोटी सी मैंने दी, कोशिश करी है दिखाने की, तो रीडेबल नहीं होगा आई थिंक। तो इसमें बताया गया था कि जब प्लांट फ्रेश होता है और उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाईली टॉक्सिकेटेड हो जाता है, ठीक है, नार्कोटिक स्मेल भी आती है। और जैसे ही उसको पीते हैं पानी को, अगर पानी में डाल के प्लांट को रब किया गया और उसके बाद उस पानी को पिया जाएगा तो एकदम से इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट देता है, इसलिए उसे पॉइजनस भी बोलते हैं, पॉइजनस भी बोला गया है। उसके बाद जब हम डेटा की बात करते हैं कि कब से इसके ऊपर स्टडीज होनी शुरू हुई, कब से लोग बागों ने इसके ऊपर और ध्यान देना शुरू करा कि कैसे कैसे इतनी मेडिकल बेनिफिट्स हैं और उनको समझ के आगे काम करना शुरू करा, तो ऐसी स्टडीज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टडी हमारे को इंग्लैंड में मिलती है जो कंडक्ट करी गई थी पेशेंट्स के ऊपर। शॉन्गसे ने 1838 के अंदर कंडक्ट करी थी। इसमें इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया था। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने जब स्टडी कंडक्ट करी तो उसको सबसे पहले इंडियन फार्माकोपी से लिया गया था और उसको फिर टेस्ट करा गया डॉग्स के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर, जो टेटनस होता है, टेटनस, रेबीज, एपिलेप्सी एंड rheumatoid arthritis। एंड आई टेल यू कि rheumatoid arthritis में आप मेडिकली कैनबिस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। सॉरी। फिर उसके बाद इंडियन हैम ट्रीट्स कफ। अभी करंटली अगर हम देखें तो ट्यूबरक्लोसिस में पर्ट्यूसिस, माइग्रेन, जॉइंट पेन, गाउट और मॉर्फिन विड्रॉल, इसमें भी अगर हम कैनाबिस का यूज़ करते हैं। उस समय उन्होंने एक रिसर्च करी थी जिसके अंदर ये मिला था क्लैंटनिंग ने 1843 के अंदर, कि जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में, पर्ट्यूसिस में, माइग्रेन में, जॉइंट पेन में, गाउट में और मॉर्फिन विड्रॉल के अंदर कैनाबिस का बहुत अच्छा यूज़ देखने को मिला था। तो बाय डिफ़ॉल्ट कि ये पूरी डिटेल्ड स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट इनकी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, तो वहीं से मैंने इन्हें कोट करा है। फिर कैनाबिस का बहुत अच्छा रोल रिजल्ट है टिनिटस में, जिसके ऊपर निकोलस ने 1698 में एक स्टडी करी थी, जिसको रूसो ने अपने पेपर में 2014 में क्रॉस रेफरेंस में दिया है कि हैम कंटेन्स मच ऑयल, लिटिल सॉल्ट, इट इज स्पेसिफिक फॉर बर्न्स, फॉर रोरिंग इन द ईयर्स, टू किल वर्म्स। मगर कानों में जब आवाज आती है तो वहां से रेफरेंस लिया गया। टिनिटस इज कर्णनाद अगर हम आयुर्वेद में बात करते हैं, तो रोरिंग इन द ईयर्स अगर कान में आवाज आ रही है, उसके अंदर भी मेडिसिन का जो ऑयल है सीबीडी या टीएचसी हम किसी को भी कहते हैं, जो ऑयल हम करंटली यूज कर रहे हैं मेडिसिनल प्रैक्टिसेस में, अगर उसको भी हम यूज करते हैं, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि हमें किस फॉर्म में यूज करना है। सो वी नीड टू डिस्कवर इट फर्दर कि हमें कैसे इसे कर्णनाद में यूज कर सकते हैं, बिकॉज टिनिटस इज अ वेरी वेरी डेंजर डिसीज की करंटली पेशेंट वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में लैंड हो जाता है अगर उसे टिनिटस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रिंगिंग इन द ईयर्स, वो चाहे वो रिंगिंग हो या बेल्स हो या ज करके एक साउंड अजीब सी आती है वो हो। तो currently I'm treating 2 to 3 patients of tinnitus and they are responding well to the medical cannabis with oral tinctures। हम उससे oral tinctures पे तो उस पे रिजल्ट है, लेकिन फर्दर हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कैसे अगर हम कुछ इंस्टिल कर सकते हैं कान में किसी तरह से, तो उसमें उसका रिजल्ट कैसा आएगा। डॉक्यूमेंटेड इम्प्रूवमेंट टिनिटस एसोसिएटेड विद बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बाय टीएचसी। तो रेबी एटाल ने 2006 में एक स्टडी करी थी जिसके अंदर ये मिला था कि जो बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है उसमें टीएचसी को जो हम देते हैं तो वहां से इंप्रूवमेंट आता है टिनिटस में। गिवन द कैनाबाइड रिसेप्टर टाइप 1 इज एक्सप्रेस्ड इन कॉक्लियर न्यूक्लियर सेल्स। जेंग एट ऑल ने बताया था कि सीबीडी सीबी1 रिसेप्टर्स जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियर सेल्स में है, जिसकी वजह से वहां पे टिनिटस में उसका इफेक्ट आता है। फिर टेटेनस ट्रीटमेंट में इसके शांगसे ने कंडक्टेड द सेमिनल वर्क ऑन द ट्रीटिंग टेटेनस विद कैनाबिस। टेटेनस वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल एट टाइम। शांगसे ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसमें उन्होंने 3 पेशेंट्स लिए थे। तीनों पेशेंट्स को उन्होंने, टेटेनस के पेशेंट थे, और उन्होंने जैसे ही उसको मेडिकल कैनाबिस की मेडिसिन दी तो उन तीनों ही सर्वाइव हो गए। उसमें से एक पेशेंट लेटली मर गया था क्योंकि उसका एम्पुटेशन होना था और एम्पुटेशन नहीं, उसने मना कर दिया था, बट अदर ऑल 3 वर सर्वाइव। 1863 में यूनियन सोल्जर था, उसको एक मस्केट बॉल वुंड हुआ था। मस्केट बॉल वुंड बेसिकली रेडियोल्नर फ्रैक्चर होता है, टेटेनस होता है और साथ में गैंग्रीन।
तो मस्कट बॉल वुंड था, उसमें उसको मेडिकल कैनबिस दिया था और उसके अंदर भी उसका रिजल्ट आया था। अब करंटली ये क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट चॉइस हो सकता है टेटनस के लिए इंडिया में भी या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने की ज़रूरत है। कैनाबिस हिस्ट्री ऑफ पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट, तो पीडियाट्रिक में करंटली अगर हम देखते हैं तो बच्चों में हम कैनाबिस देने के लिए मना करते हैं, बट अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो शॉन्गसे ने स्टडी करे चिल्ड्रन के ऊपर 40 डे इन्फेंट वाज सीजर्स, उनको उन्होंने दिया था मेडिकल कैनाबिस, और कैनाबिस देने के बाद उन्होंने देखा था कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए थे। डॉक्यूमेंट 1970 से 1990 में मिक्स्ड विद स्वीट्स टू काम चिल्ड्रंस इन नेपाल, एनाल्जेसिक फॉर बॉयज अंडरगोइंग सर्कमसिजन उज़्बेकिस्तान में दिया जाता है। गांजा कंप्रेस्ड यूज फॉर पेन इन नियोनेट्स जमाइका में दिया जाता है। एंड इन मोरक्को इट्स कंबाइंड विद मिंट टी टू एक्सपेल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। तो क्रिमिग्न भी है ये, उसके बाद शोथहर भी है ये, साथ ही में अगर हम देखते हैं तो वेदना हर भी है। तीनों ही इफेक्ट इसको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट ज़्यादा देर मात्रा में देने से इसका ये भी मेंशन करा गया है कि प्यूटेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैनाबिस ऑन डेवलपिंग ब्रेन, कि अगर डेवलपिंग ब्रेन में हम ज़्यादा, बच्चा जब ग्रोइंग एज में है उस समय पे हम ज़्यादा कैनाबिस का यूज़ देते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। सो फर्दर वी विल प्रोग्रेस। तो दिस इज द 6,000 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ कैनाबिस की, कैसे कैसे कैनाबिस एक जगह से दूसरी जगह पे गई है। और इसमें हमारी रेफरेंस, अगर हम इसको नीचे लिंक है देखेंगे तो आप इसमें यहाँ पे इंडिया का दिया है, तो अथर्ववेद में कैनाबिस का इस्तेमाल है, और उसके बाद आचार्य में कहाँ कहाँ पे कैनाबिस का इस्तेमाल है। अगर हम इंडियन टेक्स्ट की बात करते हैं तो सभी निघंटु में मोस्टली कैनाबिस को बताया गया है, स्पेशली मदन पाल निघंटु में दिया गया है, कायदेव निघंटु में है, तो वहाँ पे भी कैनाबिस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है। रिक्रिएशनल एंड मेडिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो historically cannabis and other drugs have been used as medications and intoxicants. Early on, the distinction between medical and quasi-medical was unclear. People in India had little access to physician care, and home remedies and tonics were common. तो अगर रिक्रिएशनल या मेडिकल हिस्ट्री की हम इंडिया में बात करते हैं तो पहले के टाइम पे क्योंकि फिजिशियन का एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं था, तो जैसे जिसको जो पता था उसको वो उसी तरह से यूज़ कर रहा था। और कैनबिस या पॉपी की हम बात करते हैं, अफीम की बात करते हैं, वो शुरू से ही कहीं न कहीं हमारे डेली की मेडिसिन का एक पार्ट रहा है। किसी न किसी फॉर्म में, अगर आज हम इंडिया की भी बात करते हैं तो एक ट्रेडिशन आता है शिवरात्रि का, जिस पे मोस्टली इंडिया, ऑल ओवर इंडिया भांग हर कोई पीता है। तो उसके भी कहीं न कहीं साइंटिफिक बेनिफिट्स आते हैं कि उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं, उनको वो भांग मिनिमम मात्रा में अगर हम देते हैं तो वो एड्रेस करती है और वो चेंजेस आते हैं। बट अगर वही इंटॉक्सिकेशन लेवल में चला जाता है तो वो लोग बागों ने साइंटिफिक वैल्यू से हट के रिक्रिएशनल में ज़्यादा चले गए हैं, और उसको थोड़ा नशे की तरह ज़्यादा इस्तेमाल करने लग शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो टैबू के अंदर कंसिडर होने लग गया। तो लेकिन उस समय पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे कि मेडिसिनली उसको यूज़ कैसे किया जाए, और ना वो इतना आइडेंटिफिकेशन होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस का प्रोग्रेशन हुआ वैसे वैसे ये चीज़ें हटनी शुरू हो गई, एंड दिस डिस्टिंक्शंस बिकेम मोर क्लियर कि कैसे उसको मेडिसिनली यूज़ करना है या रिक्रिएशनली यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें पता लगनी शुरू हो गई। लेकिन प्रोग्रेशन हुआ, लेकिन वो मेडिसिनली बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, या जो डेवलपमेंट थी भी उसको दबा दिया गया। आगे हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैनबिस को मेडिसिनली, जो इंडिया की मेडिसिनल वैल्यूज़ भी थी कैनबिस को, उनमें ख़त्म करा गया, एंड मोर ओवर ऑल ओवर वर्ल्ड वो सारी चीज़ें ख़त्म करी गई। बाद में धीरे धीरे उन्हीं सब चीज़ों को कैसे डीक्रिमिनलाइज करके लीगलाइज करा गया, और उसके बाद फिर दोबारा से मेडिकली कैनबिस का यूज़ होना शुरू हुआ। So our session is all about this also as well. अभी coming slides में हम उसी के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। So progress on cannabis अभी टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेड थी, so that's why वेस्टर्न मेडिसिन कैनबिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस का प्रोग्रेस हुआ, नाउ दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैनबिस, वो एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसको भी फर्दर यूज कर रहे हैं, एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज अ मेडिसिन एवरीवेयर। सो पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हुई कैनबिस में? सो इफ विल गो बैक टू 1800s, सो कैनबिस एल्टीट्यूड और पॉलिसीज ब्रिटेन ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करी थी।
तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि कैनाबिस को इम्प्लीमेंट करा सिर्फ सेल्स और टेक्सटाइल्स के लिए, और कुछ नहीं। उसमें टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में कैनाबिस बहुत ज़्यादा यूजफुल था। 1830 और शॉन्सी ने जब टीएचसी इन कैनाबिस को मेडिसिनली यूजफुल दिखाया कि ये यूजफुल हो सकता है और कैसे इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ब्रिटिश ने इंडिया के साथ, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस समय था, तो उन्होंने रिलेशनशिप विद इंडिया, ब्रिटिश कमीशन एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ओपियम एंड विद इट कैनाबिस। तो उन्होंने इंडिया के अंदर स्टडीज करवाई, इंडिया के अंदर ही पेशेंट्स के ऊपर स्टडीज करवाई। इंडिया हेम्प ड्रग कमीशन एक उन्होंने बनाया, जिसके अंडर वो सारी स्टडीज हुई। तो जब स्टडीज हुई तो उन्होंने देखा कि कैनबिस का मॉडरेट यूज जो है दैट्स गुड फॉर हेल्थ। एंड गवर्नमेंट ने एक बात बताई कि उसमें कोई भी हमें ऐसा एक्शन, क्योंकि वो यूज है और अच्छा है, बट ऐसा एक्शन कोई भी नहीं होना चाहिए जिससे उसका अब्यूज होना शुरू हो जाए और इलीगल स्मगलिंग होनी शुरू हो, ट्रीटीज बनी। इसके लिए फिर उन्होंने कैनबिस को टैक्सेशन सिस्टम में डाला, एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं उसको रेस्ट्रिक्ट भी करा कि जिससे कि उसको ओवर यूज, क्योंकि इंडिया में अबंडेंटली कैनबिस अवेलेबल है, अगर उसको वो डील, अगर उसे लीगलाइज उसी समय पे कर दिया जाता, शायद उसका अब्यूज बढ़ जाता है रादर देन यूज होने की। लेकिन दूसरा हम पॉइंट यहाँ ये भी देख सकते हैं कि कैनाबिस दो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, उस समय स्टडीज में ये मिला है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस करा है कि टेटनस में इफेक्टिव है, उसके बाद टेनिटस में इफेक्टिव है, एपिलेप्सी में इफेक्टिव है, मल्टीपल सिस्टम्स में उसको मेंशन कर रखा है, बट स्टिल उसको कहीं भी कंसिडरेशन नहीं दिया गया। कंसिडरेशन ना देने का कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो सकता है क्योंकि 1900s के आसपास जो फार्मास था वो फार्मा इवॉल्व होना शुरू हुआ था। तो जब फार्मा इवॉल्व हो रहा था उस समय अगर ऐसा कोई भी ड्रग मार्केट में होता जिसको आप डायरेक्टली लेके और उसे मार्केट कर सकते हो, तो फार्मा लॉबी जो है वहां पे दिक्कतें आ सकती थी। तो फार्मा जब इवॉल्व हो रहा था, उनका प्रिंसिपल क्या है किसी भी स्टडी को करने का, कि वो एक स्टडी लेते हैं, उससे मॉलिक्यूल फॉर्मुलेट करा, उस मॉलिक्यूल को अलग अलग स्टेज पे ट्रायल्स करे, ट्रायल्स करने के बाद वो मार्केट में उस मेडिसिन को लेके आते हैं विद क्लेम कि ये मेडिसिन इस डिसीज में इफेक्टिव है। बट ऑन द अदर हैंड आपको एक मेडिसिन डायरेक्ट मिल रही है जो इफेक्टिव है, तो आप उसके लिए अपनी मोनोपोली नहीं बना सकते। तो जब वो मोनोपोली उनकी डेंजर में है, तो इसलिए उन्होंने कुछ मेडिसिन ऐसी थी जिन, इसीलिए आयुर्वेद का भी उन्होंने वहां पे आयुर्वेद भी लिमिट करा, और ऐसी कुछ मेडिसिन जो यूज हो सकती थी उनको भी लिमिट करा। बट जैसे जैसे उसके इफेक्ट्स अब दिख रहे हैं वैसे वैसे उनको इवॉल्व होना शुरू हो गया, एंड दे आर नाउ अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग कि सेम मेडिसिन का वो एक्सट्रैक्ट लेके और उस मॉलिक्यूल को डेवलप करके और उसको आगे फर्दर रिसर्च में लेकर, फॉर एग्जांपल अभी जीडब्ल्यू फार्मा ने एपिडाइलेक्स बनाया है, डोर्नाबिडॉल जो एक सिंथेटिक कैनाबिनॉइड है, सो दैट इज नॉट शेड्यूल्ड, बट अदर सीबीडी एंड टीएचसी आर शेड्यूल्ड। तो उसके बाद उसी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, तो आगे आगे अगर हम देखते हैं 1900 में जब फार्मा इवॉल्व हो रहा था, तो कन्वेंशन हुए अलग अलग यूएन में। तो एक कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स एंड 1961 में हुआ था जो यूएन में। So which says that drug abuse is scourge must limit exclusively to medical and scientific purpose the production use of drugs. The use of psychoactive substance for medical and scientific purpose is indispensable and their availability for such purpose should not be unduly restricted. तो साइकोएक्टिव सब्सटेंस की कैटेगरी में कैनबिस को ऐड करा गया, और कैनबिस दो इट इज अ साइकोएक्टिव बट इट हैज मेडिसिनल वैल्यूज मोर ओवर देन साइकोएक्टिव पर्पस, but still it is added to the psychoactive substance so that it is covered under the psychoactive substance abuse disorders. उसको फिर मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव उसको शेड्यूल 4 में ऐड करा गया, +1 उसमें ऐड करा गया। शेड्यूल 4 का मतलब था जो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी और सबसे ज्यादा डेंजरस ड्रग थी। लेकिन उसमें उन्होंने एक ट्रीटी बनाई जिसके अंदर नेशन को एम्पावर करा कि वो अपने हिसाब से उसको या तो रिक्वायर्ड है या प्रोहिबिट कर सकते हैं, या फिर उसको रिक्वायरमेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट ड्रग शेड्यूल 4 में रहेगी। उसके बाद कैनबिस रेजिन्स को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने उसको वही है जैसे हमने पहले बात करी, उन्होंने लिस्ट कर दिया उसको स्पेसिफिकली शेड्यूल 4 के अंदर, जो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी थी मेडिसिन की। और जो टिंचर्स हैं जो करंटली हम यूज कर रहे हैं उनको उन्होंने लेस रेस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में रखा जो शेड्यूल 1 कैटेगरी थी। फिर यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक ड्रग्स पे हुआ जो 1971 में हुआ। उन्होंने एक नया शेड्यूल सिस्टम दिया, उसमें शेड्यूल 1 को, जो शेड्यूल 4 पहले मोस्ट था और शेड्यूल 1 लेस था, उन्होंने शेड्यूल 1 को भी मोस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसमें क्या कर दिया कि अब अगर कोई भी यूज करना है
तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होनी चाहिए जो लाइसेंस लेंगे, उसके बाद ही उसको मेडिसिन को या मेडिसिनल पर्पस के लिए किसी भी कैनाबिस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एंड THC एंड इट्स आइसोमर्स वर लिस्टेड एज शेड्यूल 1 बट CBD नॉट लिस्टेड। उसमें CBD को उन्होंने लिस्ट नहीं करा, लेकिन THC और उसके रिलेटेड जितने भी थे उनको उन्होंने शेड्यूल 1 में लिस्ट कर दिया। जैसे हमने बात करी डोर्नाबिनॉल जो है उनको शेड्यूल 2 में डाल दिया अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल 1, बिकॉज डोर्नाबिनॉल जो है वो एक सिंथेटिक है CBD, वो प्लांट डिराइव नहीं है। तो ये शेड्यूलिंग है कैनाबिस की कैसे कैसे है। तो कैनाबिस और रेजिन्स को शेड्यूल 1 और 4 में रखा गया, एक्सट्रैक्ट्स को शेड्यूल 1 में, और MHRA अप्रूव्ड एक्सट्रैक्ट को शेड्यूल 1 में। सो ये देख सकते हैं आप कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे उसको शेड्यूल 1 में और किस किस चीज़ को शेड्यूल 2 और 3 में रखा गया। सो दिस इज आर फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज, क्योंकि सभी के पास आपके पास ऐसे पेशेंट्स होंगे जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी ड्रग किस जगह पे शेड्यूल्ड है, अगर उसकी नॉलेज हमें होगी, सो दैट वी कैन नॉट उसके हिसाब से हम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि किस रेंज में उसे प्रिस्क्रिप्शन करना, राइट। फिर जैसे हमने बात करी कि क्रिमिनलाइजेशन करा गया, जैसे ही वेस्टर्न मेडिसिन में इन्हें बेनिफिट दिखना शुरू हुआ कि कैनाबिस के बेनिफिट्स कितने सारे हैं, तो उन्होंने उसको डीक्रिमिनलाइज करना शुरू करा। तो डीक्रिमिनलाइज में उन्होंने क्या करा, स्टेट जो पेनल्टीज उन्होंने इम्पोज करी थी कैनाबिस के ऊपर, कैनाबिस मेडिकेशन के ऊपर, उसको उन्होंने कम करना शुरू करा। Apart from that, 1972 President Nixon ने appointed National Commission on Marijuana and Drug Abuse, but rejected its recommendation to decriminalization process. उसके बाद डजन बहुत सारी स्टेट्स ने डीक्रिमिनलाइज करना शुरू करा थोड़े थोड़े अमाउंट में, एंड करेंटली अगर हम बात करते तो 21 स्टेट्स इन DC हैव डीक्रिमिनलाइज्ड इन दिस वे। मेडिकल कैनाबिस के लॉज पास करे गए 1996 में, एंड रिक्रिएशनल कैनाबिस का इस्तेमाल जो है वो पढ़ाया गया 2012 से। उससे पहले वो नहीं था, 2012 से रिक्रिएशनल यूज भी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये करंट पिक्चर है, अगर आप देख रहे हैं तो करंट पिक्चर में कहाँ कहाँ पे ये ब्लू वाला है, ब्लू दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। यहाँ पे इन एरियाज में अमेरिका में डीक्रिमिनलाइज है, यहाँ पे थोड़ा सा डीक्रिमिनलाइज हो गया है, यहाँ पे कोई क्रिमिनलेशन नहीं है, आप रिक्रिएशनल यूज भी कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी है। अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पे आता है। इंडिया में अभी तक डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ है, तो मेडिकल कैनाबिस यूज इज स्ट्रिक्ट इलीगल एंड स्ट्रिक्ट वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस आर देयर अगर आप इसे यूज करते हैं तो, राइट। कोई पर्टिकुलरली लॉ नहीं दिए गए हैं उसके यूज के लिए। इंटरनेशनल कैनाबिस लॉज क्या कहते हैं? कैनाबिस लॉज वेरी वाइडली अक्रॉस कंट्रीज, हर कंट्री के अपने अपने लॉ हैं करंटली, कोई ऐसा नहीं है। 4 कंट्रीज ने लीगलाइज कर दिया है फॉर रिक्रिएशनल कैनाबिस एज वेल, जिसमें कनाडा है, यूके है, साउथ अफ्रीका एंड जॉर्जिया है। 33 countries have legalized medical cannabis, जिसमें एक्सक्लूडिंग यूएस एंड अदर कंट्रीज विद पार्शियल लीगलाइजेशन। यूएस में अभी नहीं है, लेकिन यूएस ने अब करना शुरू कर दिया। यूएस में बहुत जगह मेडिकल कैनाबिस लीगलाइज है। 8 countries have legalized cultivation of cannabis, इंडिया उनमें से कोई नहीं है। इंडिया में अभी कल्टीवेशन नहीं है, सिर्फ मेडिसिनल पर्पज के लिए हम कैनाबिस को यूज कर सकते हैं। तो कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका, चीफ कोलंबिया, जमाइका, श्रीलंका, इवन अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में तो इतना लीगलाइज है कि अगर आप हाई हो THC में तब भी आप ड्राइव कर सकते हो और वहाँ पे चालान नहीं है। So many other countries have decriminalized cannabis to varying degrees or have taken a lenient approach to law enforcement. So this is all just because to see कि cannabis के medicinal benefits कितने सारे हैं। एंड रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज आई हैं जिसके अंदर हमने ये भी देखा कि अगर कोई पर्सन कैनाबिस रेगुलर यूज कर रहा है, उसके बाद जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ब्रेन ट्रॉमा को बहुत हद तक कैनाबिस यूज प्रोटेक्ट कर रहा है। दे आर स्टिल सर्चिंग कि अगर उन्होंने कंपैरेटिव देखा है, जब एक्सीडेंट्स में देखे तो जो पेशेंट कैनाबिस यूज करते थे उनके ब्रेन एक्सीडेंट के बाद ब्रेन इमेजेस, और जो कैनाबिस यूज नहीं कर रहे थे उनके एक्सीडेंट के बाद ब्रेन इमेजेस, दोनों में डिफरेंस है। एंड वेरिंग है डिग्री में भी कि कहाँ पे उसका लिथैलिटी कितनी है। अब चाहे वो मेडिकल कैनाबिस को रिक्रिएशनली यूज करो या मेडिकली यूज करो, बट देयर वर डिफरेंसेस। सो दीज स्टडीज आर आल्सो गोइंग ऑन फर्दर। So I'll summarize the complete thing right now. So not only cannabis laws vary widely from state to state, cannabis laws vary dramatically across the world. हर एक country के अपने अलग laws है cannabis को लेके. So some countries have legalized nationally, some legalized for medical reasons only, and some decriminalized it, and some with strict laws. कहीं पे strict laws हैं, for example इंडिया में अभी भी laws हैं। डिक्रिमिनलाइज बहुत जगह हो गया है, यहाँ पे सिर्फ मेडिकल रीजन के लिए है, बट अदरवाइज स्ट्रिक्ट है। मोस्टली स्टेट्स में इंडिया में भी देखें तो लीगलाइज नहीं है कैनाबिस। कुछ फॉर एग्जांपल यूपी, मध्य प्रदेश, कुछ ही जगह है जहाँ पे कैनाबिस मेडिसिनली भी लीगलाइज्ड है, अदरवाइज
सिर्फ आयुष के अंडर ही वो मेडिसिन प्रैक्टिस हो सकती है। और करंटली बहुत ज़्यादा सारे लॉज इवॉल्व हो रहे हैं। होपफुली इंडिया में भी ऐसा कुछ हो कि लॉज इवॉल्व हो जाए एंड वी विल बी यूजिंग इट एज अ मेडिकली ओपनली, कि हर कोई उसको यूज़ कर सके। So to conclude the session, cannabis we are using since more than 10,000 years. तो अगर हम भारत की भी, हमने जैसे शुरू में बात करी, भारत की बात करें तो जब से शुरू हुआ है तब से कैनाबिस यूज़ हो रहा है और होता रहेगा। अलग अलग पर्पसेस से यूज़ हो रहा है, लेकिन करंटली वी आर मोर फोकसिंग ऑन कि मेडिसिनली उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स मैक्सिमम एक्सटेंट तक ले सकते हैं। ठीक है। हर एक डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं कैनाबिस का यूज़ हमें मिला है, राइट। और मेडिकल मारिजुआना करंटली ट्रेंड है हर जगह। अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वहाँ तो छोटे छोटे आई थिंक वो बने हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप लीगली परचेज कर सकते हो एंड वहीं पे उन्हें स्मोक कर सकते हो। तो स्मोक का अलग अलग यूज़ भी हैं, कैसे कैसे आप मेडिसिनली उसे यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स वेप्स हैं, फ्यूम्स हैं, या फिर स्मोक कर सकते हैं, टिंचर्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं। इन मैनी वेज यू कैन यूज़ इट। और नाउ कैसे करंटली ये है कि जो इसमें हमने देखा है कम्प्लीटली कि कैसे हम इसे और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सीजर्स के लिए। जो अभी तक करंटली सीजर्स बच्चों में अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें आ रहा है, लेकिन उसके लिए और लार्ज स्केल स्टडीज़ करके, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा उसमें कि कैसे लार्ज स्केल स्टडीज़ करके उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, सो दैट इट विल लीड टू अ वेरी गुड लाइफ फॉर द पेशेंट एज वेल। सो I conclude with this, and thanks Dr. Piyush and Jahan for giving me this opportunity and sharing my views. So I think this is an important one कि हमें पता हो कैसे हम कैनबिस को मेडिसिनली यूज कर सकते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या रही है डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सिविलाइजेशंस में, सो दैट कि एक ब्रीफ आइडिया में रहेगा। लाइक आई सेड बिफोर कि अगर हम इसको डिस्कस करते रहें सो इट्स नॉन एंडिंग टॉपिक, हम कितना भी लंबा इसे डिस्कस कर सकते हैं। बट टू समराइज जितनी भी चीज़ें थी डिफरेंट कल्चर से, आई ट्राइड टू समराइज इट इन अ स्मॉल वे। सो या Thank you, आई thank वुड you so लाइक। much. Thank you so much for that, Dr. Prashant. And especially from my side, maybe before handing over to Dr. Piyush, I'll share a couple of thoughts as well. For at least from my side, majorly because we look at a lot of the research, a lot of it is a pleasant surprise. For example, the use of it in tetanus historically, and I think a lot of it is relevant to the future. For example, tinnitus, जो आप mention कर रहे हो, where a generation of earphone wearing, loud decibel blaring music, which is eventually going to have this effect, jahan pe there will be issues with the auditory canals and with the how the cannabinoid receptors work on it. I think so what you have touched upon is very relevant as well. In fact, just a couple of points I thought I'll add on as a cherry on the cake from my side. A few things that struck me historically as well as some knowledge to as common knowledge to share. I think one some is on the industrial, the hemp front, जो fiber होता है, जो seed होता है, etc. And the other is on the medicine front. During our readings, we were so fascinated to realize कि जो cannabis जो आप बोल रहे कि hemp की जो fiber है, it all started from there in the UK. In fact, during our readings, we learned कि when Napoleon was alive at that time, there was something called the Napoleonic Wars with Russia and with UK and all. The major commodity that was the reason for that was hemp fiber. क्योंकि they wanted to grow it, they wanted to see कि cotton का replacement हो सकता है मैनचेस्टर में over time, but the sort of the cotton lobby did not want that to happen, and it created like this entire sort of war situation. And what's interesting, sir, is ki it has evolved so much from there also. I remember we had read one paper, lesser known paper in 1853-54 from a French microbiology institute that was studying cannabis and hemp, Indian hemp in India. And they had arrived at the same conclusions as helping in anxiety, in respiratory or disorders, pain disorders, and it must continue. And that built like the first gateway to the drug commission report and a lot of the data. And I think the strength we have in India is कि हमारे जो regulators है have always been strong and stood up for what they believe is right. For example, when we were reading, you had mentioned the UN Single Convention in 61. Now, what happened in 59 was Tilak Raj, who was the Central Board Revenue Narcotic Commissioner. We had the Central Board Revenue officer at that time. They were the delegation that sat in this international council. And when we did some reading, we went into the archives, we realized कि उन्होंने भांग के लिए लड़ा था. They had fought to exclude the leaf
from the definition of cannabis, क्योंकि they knew historically, culturally, medical use, there was already there. So that type of vision कि 1960 में उनको पता था कि this will have to continue, and today 60 years later we are at a point where now the patients, doctors are rediscovering what we already knew. And I think, what you have shared is a great insight and a very strong testimony कि हमारा जो history is as strong as the present we have to use this. And the right clinical approach, working with doctors, with patients, trying in different forms, as you mentioned. In fact, one story that came to me was, I'm sure you have to come across Professor Rafael Mekulim from Israel in the 60s and 70s, जिन्होंने ज़्यादा THC और CBD पे काम किया था. So he's a very good friend of ours. We had spoke to him once, and he told me something very interesting. कि जब when the first time he studied cannabis, how he got the cannabis was so interesting. He had a police officer friend जिन्होंने चरस, that is hash, उन्होंने seize किया था as a narcotic. And he went to his police officer friend and pestered him for 6 months, 8 months. You are not using it. You're going to dispose it. You're going to burn it. ऐसे करो, आप मुझे दे दो, मैं मेरे लैब में ले लेता हूँ. I will study the cannabinoids. Let me just study it. I don't want to abuse it. And that was the first time the first license was created. He had to sit at the office of the regulator, एक छोटा सा चिट्ठी पर्ची लाने के लिए. But that led to a revolution. कि today we know how anandamide works, 2AG works, how THC works, CBD works, क्योंकि ऐसे these small things that kick off. And I think the irony is कि शायद वो जो चरस, जो hash था at that time, that was illegal contraband, would have come from one of two places. It would have come from the Indian subcontinent of Afghanistan, or would have come from Africa, which I think is a great dial back to historically how this crop has been so important. It led it to in future waters in Israel and Europe, where they discovered what we already knew. And I think, what you have presented, sir, is a great testimony to that. And I really thank you and grateful for the wide variety of learning. And I'll hand over to Dr. Piyush. Would love to get your thoughts as well, and maybe then we can jump into some questions whenever you feel fit also. Yeah, thanks, Jahan. First of all, I would like to congratulate and appreciate Dr. Prashant for his very well presented talk, and he has summarized the entire history in few slides. I think really hard work you have done for doing this, and again, we congratulate and appreciate your efforts. And we need more doctors and more people like you, because the entire idea of developing our platform into a platform where people can come and talk on medical cannabis and related aspects is, I think, gradually getting successful with these kind of sessions. And I always wanted that more and more doctors should speak, more and more doctors should come forward and have the presentation, have the discussion. So I think my purpose is solved today, and we would like to have you in more and more sessions in future as well. And I come again, thanks and appreciate Bombay Ham Company and Jahan for these kind of efforts and these kind of sessions, because this is really a very important session, and we need to understand where we are coming from. And I think in this entire world, everything you do, your karmas, I'm just talking out of the way, but I will show you one picture, a very interesting picture I always see. And so when you do any karma, or whatever you do in your life, it will come back to you in any aspect. In any aspect, it will come back to you, and you will maybe think at that time that what you have done, and if you have done something positive, it will come you as a positive. If you have done something negative, it will come to you as a negative. And this applies to all the phenomenon and all the things. So at one time, cannabis was ruling the world, and people have tried to ban, inhibit, or prohibit the plant. And now again, it is, I think, kind of re like reinventing the wheel, I will say. In fact, technically it's not invention, it's already being invented and discovered like so many years back. But still, so many new and new advanced milestones we are seeing, like two significant very significant, in fact, developments in the recent times are an indication that the future is going to be a very bright for this particular plant. And why I am saying, because as you mentioned in your presentation, Dr. Prashant, that somehow, again, I don't want to criticize any pathy here or any system here, but somehow due to some issues, the entire pharma lobby stood against this plant at some point of time in our history.
And now you see two leading firms, two leading pharmaceutical companies of the world, one from US, Pfizer. They have done a $6 billion deal to purchase a medical cannabis company, as per my information. Correct me if I'm wrong, Jahan. In the news, it was there. And recently, Dr. Reddy's also purchased one German company, or maybe I think some joint venture or acquired. I'm not known aware the technicality of the model, but somehow they have got involved into the medical cannabis business with a German firm. So these two companies, Dr. Reddy's and Pfizer's, are the leading companies of their own domain, and one is from India, another is from US. And why they are getting and why they are entering into medical cannabis reflects that they know the potential of this herb, they know the potential of this particular domain of this plant. Maybe their interest can be pure commercial, but all these stalwarts and all these leaders of pharma industry are not that I don't want to use that word, but they're not fools, and they know the science, they know the mechanisms, they know the potential. And a single plant and a single herb can do this kind of aspect and this kind of business. In fact, if we calculate the entire business of so many plants we know, so many herbs we know, this will definitely come in maybe top three or top five. I need to check the data, but as per my knowledge, it will definitely come into that. So now again, the world is going back and listening to all the research studies and all. And so I quickly want to share one very interesting piece of. Let me just check if I am able to share that. Just a second, please. And I think in the meanwhile, Dr. Piyush, what you said is right. It is several multi-billion dollar deals, the Pfizer's, Dr. Reddy's. In fact, there are other pharmaceutical medical cannabis companies, working very closely together. Otsuka Pharmaceutical is another, a very big one from Japan that's been in the space. GW Pharmaceutical was also picked up, brought into a larger pharma's wing. There is a lot of potential and scope, and I think now these cannabinoids, along with the research and clinical evidence that is being generated by doctors like yourself and Dr. Prashant, your equivalents overseas, has built the case for this. Because I remember the Epidiolex that you were speaking about. I remember that when it first started, it began with Charlotte Figge's story and Charlotte's Web, and very close to the Stanley brothers, who ran it. And it came out of Dr. Sanjay Gupta's thing on CNN, and it just blasted across the world. And it became the biggest news that this is actually helping, and then led to an FDA approved drug. It sometimes, it's so quite extraordinary ki we have the solution sitting in our own backyard, and it took something a world away in terms of an evidence or some type of action for us to realize that we just need to look behind us to see what is growing here, to take our local practitioners support and help and expertise to know what can make us better. And I think that is a great testament to that, Dr. Piyush. So please feel free. Yeah, so I just gathered this picture, this image. I just need to remember the source of this. But it was a beautiful journey, which I always see that if you see in this picture, so in 2000 BC or around 1500 BC, so our Vedas as well as the ancient Egyptians are there as far as the cannabis correlation is concerned. So from here, the journey started. Just to summarize what Dr. Prashant said today in a very detailed and very structured manner. Now you can see that in 300 BC, Europe is like being exposed or being introduced to cannabis. Then in 70 AD, Greek physicians classifying this as a healing herb. So everything was going positive till Sorry, 2000 Dr. AD Piyush, again. just want to, sorry to interrupt you. I think what you're screen sharing is actually the video of myself, Dr. Prashant, and you. I think you may have to share Okay. a separate page. We're not able to see Okay. that. Just give me a second. Just give me a second. So I think there is some issue. Just let me try again if I'm able to No. share this. Yeah. So just give me a minute. Let me just quickly have this picture in a slide, and I think I will be able to share. So this is a very beautiful picture in a like summarized way. And what I want to convey here is that as far as the cannabis history is concerned, it is coming 360-degree. You will just see in that in a minute that it is coming as a 360-degree, and now the entire world is realizing. So
See, we need to understand as more and more people and more countries are looking forward, and by understanding today's presentation, by knowing the potential and the history, the only thing which I want to convey every time I used to convey this, that let's focus now on doing some more constructive work, and all the audience, and why we are doing. By the way, you may be thinking that why we are doing these kind of sessions, and why we are doing these kind of webinars, is only to create a buzz, to create a maybe I'm not aware, maybe I would like to ask Dr. Prashant also, that from where he got the first exposure, or maybe the first idea of getting involved into this. You are able to see the presentation now, I think. Just a Not likely, second. sir. It's still the blank screen. Just a second. Let me just upload the slide. I think there is some issue with this today. Let me just quickly upload in the slide section. I think then it will come. So, by the way, Dr. Prashant, from where you got the this that as far as medical cannabis is concerned? What was your first maybe interaction, or where you got exposed to this So particular yeah. domain? So first, at the time when I was doing my PG post graduation in STM College of Ayurveda Udupi, so there my Right. basic topic was insomnia, right? तो Okay. जब इंसोम्निया के ऊपर मैं बहुत सारी मेडिसिन देख रहा था, कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो मेंशन्ड है टेक्स्ट में, और तो वहाँ Hmm. पे मैंने एक चीज़ देखी कि भांग का बहुत जगह मेंशन था. But at that time also I wanted to do a study over the hemp, कि मैं उसको स्टडी करूं and then I'll proceed with the same for insomnia. But due to the same regulations and all, उस समय तक इतना ज़्यादा popularized नहीं होता. I was talking about back in 2015. So at that time it was not so much popularized, and इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, so नॉलेज नहीं थी. उस समय हमने एक ट्रायल करा था पेशेंट के ऊपर, पायलट स्टडी करके देखा था. तो भांग के पत्तों का हम पेस्ट बना के और वो डायरेक्टली अप्लाई करते थे. वो मैंने अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट्स पे करके देखा कि भांग के पत्तों Hmm. का सिर्फ पेस्ट बना के आप उनके तलवों पे लगा दो, और उसी से Hmm. उनको बहुत अच्छी नींद आ जाती है. उसी से इंसोम्निया Hmm. दूर होना शुरू हो जाता है. तो Hmm. सिमिलरली वहां से एक वो था पॉइंट कि उसको हम प्रैक्टिस आगे करना चाहते थे, लेकिन वो आगे हुआ नहीं. देन अगेन Hmm. व्हेन आई मेट यू, और आपका देखा कि आपने जैसे हैम्प के ऊपर स्टार्ट करा मेडिकल कैनबिस एंड ऑल, वहां से थोड़ा सा फिर दोबारा वो एक बीच था जो 2015 में आया था, वो दोबारा से 2020-21 के अराउंड दोबारा ग्रो होना शुरू हुआ कि लेट्स डू इट, लेट्स स्टडी इट मोर. फिर वहां से दोबारा उसको पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा. देन फाइनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप सबके साथ जुड़ के और उसमें नॉलेज को बढ़ाया थोड़ा सा. Nice, nice. I think, see, again, I request, in fact, we always feel now, I think it's coming, right? So I always feel that, yes, you're able to see now, right? Yeah. So this Yes, is yes, the yes. entire journey, if I see, and I think there is some small. Let me just quickly read for all of you. So in this 2000 BC, you can see the Egyptians, and this 1500 or 1000 BC, the Vedas are there. Then this is Europe era. Then this is around Greek. Then Chinese also adopted, and accordingly then West. In fact, in this time, in this 1800 era, the West was very positive. In fact, if you see one reference, I need to check the authenticity of this reference, but it has mentioned about US pharmacopoeia as well. But again, as I think Dr. Prashant mentioned in his slides, that the negativity started somewhere here when pharma started getting evolved. But after that, Right. as Jahan mentioned about the discoveries, and also it has been discovered, and then now it is coming positive, and you can see the entire journey in one picture of this particular plant. So the only point I wanted to convey here is from this picture that it started in a positive way. You can see the wave, it is growing, growing, growing till here. And just around my point which I wanted to make here is, you can see the entire history from 2000 BC to 1851. It was positive, but after that, Right. early 1900 until now, in fact not now, it's around say in 60s or 70s, the positivity start again. So they were just able Hmm. to resist this particular plant for maybe 50 60 years, but after that they were also not able to resist, and they means whatever the people who were there to paint or to position this plant as negative. But they are now accepting that, in fact they are legalizing, they are
promoting, they are having so many aspects. In fact, they are so much ahead uh, from India and other countries like us, that we are not. We have to take us to that level in maybe next few years. So the entire idea and entire aspect of doing all these activities, and thanks again for your recognition and for accepting that at least you got some exposure from this platform as well. These are the only words which we are looking for, nothing else. We want all of you to grow. We want all of you to flourish, grow as maximum as you can. You all have, in fact, so many potential. You are postgraduate. You are doing PhD. So we need more and more people. We need more and more research mindset, because that is very important. My mindset is a clinical or a marketing person. So that is, I'm very clear, and I'm very focused on that. I'm not that much into research, to be very frank. But yes, I started my career in clinical research. So yes, I can. In fact, you mentioned about GW and Otsuka. Both were my clients, and I handled their several projects in my clinical trial life, including the regulatory framework to the clinical trials I have done. I am very few Ayurveda doctors in India right now, and I have faced more than 100 FDA audits, because one project we were handling was sponsored by US FDA. So that kind of exposure and that kind of learning I had, but ultimately I realized and I figured out that okay, clinical and marketing is my potential. But why I'm saying this, we need more and more people like Dr. Prashant. That is very important, because the research mindset, the research is the requirement. Clinically we can establish, that is in fact easy. Marketing we all can do, many of us can do, but the research, the authentic research scholars and the authentic research is the need of our Boheco, already doing so many aspects in that aspect. We all know, and we will be going to get more information soon, as they are planning to reveal some of their research study results and all. So that is important, and I have seen some kind of resistance or some kind of maybe inhibition or apprehension in many of the research scholars. But now gradually that is getting reduced, and more and more people are coming ahead. So I think Bombay Ham Company Boheco should plan to construct a consortium. In fact, this idea came up to us as well, and I think we have already announced. And let me just quickly mention in this event as well that we are very soon going to start the proceedings for India Hemp Expo. That is one of the first exhibition and event of dedicated to hemp and medical cannabis industry. In fact, today only we have finalized the venue, have closed the venue. I'm just waiting for the final confirmation, and maybe tomorrow you all will get to know where we are doing. It is in Delhi. The dates are a bit postponed. It will be around mid May now, which we thought earlier in April, but it will be in mid May, because we are getting several international queries as well. And yesterday I was seeing that all the restrictions have now lifted. They don't need any isolation or anything. Now they can just do a self declaration and they can directly enter into our country, all the foreign nationals. So we are very much hopeful that we will get good international exposure also. So I was saying, in that event we are planning to have one dedicated session with all the research scholars like you. Like for example, I would like you to get involved and moderate certain things, and we'll be, in fact I invite all the people who are listening to this, that if you are into any category of medical cannabis and you are, I love to, like, we will love to associate with all of you. So for research we want a dedicated session. We want companies like Bombay Hemp Company and other companies to get involved in that. You people have also done some research. So history is our past, history is what we know, but research will create more and more. Research will create that historical so today we are talking about history. The last and final remark I would like to contribute in this session is, so when we are seeing history, we are seeing like Dr. Prashad referred to some references also. Now today is the time that we have to create history. Means the more and more research, the more and more footprints we will be creating in next few years will be the history for the coming generation, and they will be referring that okay, Dr. Prashant Jain has done some kind of this study with his team or the colleagues, and all Bombay Ham Company has done this kind of research. So that will be the historical landmarks and points which will be referred by the future generations, especially in the Indian context and Indian scenario. These are very less. So the more we will create that, the more authentic research footprints will create an authentic history and authentic historical representation for the entire world.
I think that is the need of hour which I feel should be there. So on that note, I again like request Jahan and Dr. Prashant for their final remarks. And there are I think couple of queries also, so I would like to take that, and accordingly then we will be proceeding for the conclusion of the session. So one query is from one doctor. I just checked my inbox. So Dr. Prashant, it's for you. So the doctor is asking, as far as Ayurveda is concerned, you mentioned about certain aspects. So as per your knowledge, please again they want some clarification कि आयुर्वेदा में जो मैं समझ पाया उनका क्वेश्चन कि किन किन एस्पेक्ट्स में या कहाँ कहाँ पे आपको लगता है हिस्टोरिकली कैनाबिस या भांग का मेंशन किया गया है, कोई संहिताएं आपको स्पेसिफिकली आइडिया है कि किस संहिता में इसके बारे में ज़्यादा मेंशन है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? राइट। सो आयुर्वेद में अगर हम भांग की बात करते हैं तो आयुर्वेद में भांग का अगर सबसे पहले देखेंगे आप हारित संहिता में रेफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया कि पैरों राइट, के नीचे लेप करना है भांग का, उसका रेफरेंस आपको डायरेक्टली हारित संहिता में मिल जाएगा। त्रैलोक्य विजयवटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, रस सरंगिनी में उसका मेंशन है। बाकी भांग को अगर आप देखेंगे तो मदनपाल निघंटु में आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा, उसके सारे गुणों का रेफरेंस है उसके अंदर। कैदेव निघंटु में भांग का रेफरेंस मिल जाता है कि किस-किस गुण में दे सकते हैं। एक में उसको पित्तला कहा गया है, कफ वातहर कहा गया है, दीपनी कहा गया है, ग्राहिणी कहा गया है। तो ये सारे उसके अंदर मेंशन मिल जाएँगे आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और कुछ आपको पूरी डिटेल चाहिए तो उसके ऊपर हम एक डॉक्टर पीयूष अलग से एक सेशन रख सकते हैं कि हमारे श्योर, इंडियन क्लासिक्स में कहाँ-कहाँ पे भांग को दिया गया है और कैसे-कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। श्योर। जहान यू आर देयर? वन क्वेश्चन इज़ फॉर यू एज़ वेल। सो हम Yes, yes. हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। सो इन फैक्ट दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन माय माइंड फ्यू वीक्स बैक, आई रिमेंबर, एंड one of my very good friend is also asking on my WhatsApp right now. He is asking about the history of like entrepreneurs, like companies or business, or I don't want to quote it like it just like when India started. So I'm just not clear. Like I know that you people have started, I think 7 or 8 years back. So if we talk about history in India in terms of the businesses, in terms of this movement that cannabis should be positioned and should be. So what is your information, or what is your maybe knowledge about that? Because I know cannabis history from 2014-15 when I got connected. In fact, I was not that much active in that time in India. I got active in India in 18-19, but I got connected with some people from Canada and US. So that is my knowledge. But as you people are into this domain, so maybe you can just throw some more light that historically, when Indian scenarios started, and companies like you, or maybe prior to you, is there any company? So I can just quickly ask that आप ही सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट हैं मेडिकल कैनबिस के, या आपसे भी ओल्डेस्ट कोई कंपनी है? So please share some insights about the last 1 decade or maybe 15 years of medical cannabis business in India, please. Sure, sure. Happy to touch some light on that, Dr. Piyush. And to answer your question, yes, we began before Buhiko began. There was no company focus on industrial and medical cannabis in India. The only other companies were from 60s and 70s जो भांग के गोले बनाते थे या जो क्लासिकल वट्टी बनाते थे, but it was very low scale, majorly because that awareness was not there, that patient attention was people, there was still this fear that how do we use this, how is it legal and all, and it created this big gap. Now 2013 is when we started. It's been 9 years now, we're on our 10th year, so all going to be a decade by next year. We started as the first company ever exploring medical and industrial cannabis, जो रेगुलेटर्स के साथ बैठ के समझ में आया कि what does the law say, how does the NDPS Act structured, where we started, we began with the central ministries. Now we are working with almost 7 state governments. We started with 1-2 state governments back then, जहाँ पे we were the first company to sit down, interpret the law, help understand how it is legal, how it can be enacted, how it can be enforced. And what is quite interesting, Dr. Piyush, is we started around the same time as companies that started in Canada, जो आज multi-billion dollar public market exchange companies है.
and it showed how the change in law, how rapid the change in law started in Canada. क्योंकि हमें पता है कि 2001 में शुरू हुआ था कनाडा में, but it took them 10 years to have the framework जहाँ पे companies or organizations can come, where today there's such amazing work. There are some amazing medical cannabis companies in Canada doing, FDA license research, phase 1 to phase 3. They're developing animal models, coming out with different form factors, doing some great work. But it took them 10 years to get to a point जहाँ पे companies can really light speed. For us, we realized when we started कि nothing existed, बस कानून ही था. Law said that you can do this. How, what law says and what law means are two very different things. At a bureaucracy level, at a political level, at a social level, agriculture level. So वहाँ पे we spent the first 3-4 years helping people understand, stakeholders, whether central or state government, it is legal. How it is it, if it's legal, how it can be done. If it can be done, how is the best way they can avoid the risk, how we can avoid the risk, how can the patient and customer benefit. So that is when we started. We were amongst the first. जहाँ पे we were the first to start in this domain, the first to work with regulators, first to work on clinical trials, first to actually grow cannabis legally in the country for research purposes, having the best scientific minds actually studying cannabis. Because we realized कि हमें पूरा system बनाना पड़ेगा. And we're lucky that at the end of our 10th year today, there are other companies, there are organizations, there are great researchers and minds like yourself, like Dr. Prashant, who are doing wonderful work. But it took 10 years to get to step one. And now that we are all together on step one, we are looking forward to the next. What we did in 10 years, now we will all together do in 2 or 3 or 4. And that is how the system will keep accelerating and evolving. कि हमने शायद मतलब वो बोलते the spark जो चिंगारी होता है शायद हमने शुरू किया है, but now it is a wildfire. And now we have to tame the wildfire for doctors benefit, for patients benefit, farmer benefit, and that is the future of it. There are many companies in Canada and Europe that are doing work for decades, doing great work, but now it's India's turn. And I think, Dr. Prashant highlighted it well. The convention stated how cannabis is regulated and scheduled. And I think what happened in end 2020, when the day cannabis was rescheduled, in fact, it was my birthday, the day cannabis was rescheduled last year. And we had made recommendations. The government, lagatar, we were as industry actually had sent memorandums to the government stating why we should take a position to reschedule. Unfortunately, the government, of course, takes stakeholders' opinion, but made that right decision on their own. Ki we must vote to reschedule, and we have reached a point कि जैसे politics में kingmaker होता है, India is now an international kingmaker at the International Convention on Controlled Substances. Without our vote, it would not be rescheduled, and I think that is a great tribute to us as a country, that what we started is come back home. And thanks to platforms like this, thanks to occasions like this, and we are fortunate we started as the first. Now there are quite a few, and there is a large ecosystem. Because only through such a ecosystem, only when hundreds of doctors, thousands of patients, everyone is benefiting, can things grow. And I think that is where we are, but the future is very bright. Right, right. You are absolutely right, and I think as I, in fact, you are absolutely right. In fact, I was also not aware that there are so many companies. In fact, I am connected with you, but when we announced about this show, we are getting so many queries and so many like people and companies who are interested in this. So we are very hopeful that we'll be able to bring all the hemp, medical cannabis, and other related domain companies in this event, um, and we are also looking forward to have regular webinars and sessions like this with Bombay Ham Company in future. And Dr. Prashant, really again a very commendable effort you have done today. And we need more and more sessions like this from you and other fellow doctors from our community and fraternity to uplift the entire domain, to uplift the entire system that is medical cannabis. So thank you so much again, Jahan and Dr. Prashant, for your time. Have a nice weekend ahead. And I again thanks all the doctors, all the professionals who have joined us today. It was a very nice session and a nice strength. Always you people show to our sessions, so that is our strength. So please keep on supporting us. Do check our social media platforms handles for latest information. We'll be soon launching the entire event, and I request all the companies, all the doctors, research scholars, everybody should come together. Government institutes, we will approach each one of them that let's come together and create something which will definitely improve and it will definitely impact the entire industry. And it will see ultimately the aim which I see as a clinician.
of all these efforts is the pain, the sufferings, the health issues which people are having. So this particular plant and this particular herb is able to resolve so many issues, so many pain and so many various type of pain where they are not getting any solution from anywhere, and they are getting healed. They are getting relief in the pain from cannabis. I think that is the final goal and the final ultimate aim of all of us. Everybody will have their own journey for that, but the ultimate satisfaction is that an individual is getting healed. So I think that is the motto, and for that we all should work together and take it forward. And thank you again for all of you for joining on this session. Thanks. Thank you, sir. Thank you, Jahan and Bombay M Company, for sharing their views over the platform. And I again thank all the viewers to listen and hope I have provided some knowledge और जो भी मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क करा था hope that may benefit you all. Thank you. Thanks a lot, all of you. Thank you. Thanks, Jan. Thank you so much, everyone. Thank you.